क्या है अगेंस्ट वुल्स? आई डोंट नो व्हाट इज इट अगेंस्ट वुल्स। वी जस्ट कैन नॉट। और हाँ, मैंने बोला था यार प्रीव्यू में, मैंने क्लियरली बोला था इट्स अगेंस्ट वुल्स। यू कैन डेफिनेटली प्रेडिक्ट कि ड्रॉ होगा। यस, ड्रॉ होगा, और वी हैव टू डिपेंड बाकी टीम्स में, बिकॉज पता नहीं आप कब देखोगे वीडियो। बाय द टाइम यू वॉच, मे बी लिवरपूल हैव बीटन स्पर्स, मे बी द अदर वे अराउंड, मे बी ड्रॉ हुआ है। और हमें डिपेंड करना पड़ेगा उस पर, और स्पर्स आर्सेनल जो खेल रही है, क्योंकि यस, इट इज चेल्सी 2 वुल्स 2, डिस्पाइट रोमेलो लुकाकू। हाँ, Romelu Lukaku, he's scoring 2 goals. भाई साहब, फिर भी we couldn't take advantage and we gave away as always. Mistakes पे mistakes, and it was 2-2 in front of Todd Burley. हाँ, potentially our new owner imminent हो गया है. That is something यार not great. Expression told all. Let's get into it. Well, starting 11, Thomas Tuchel, सरप्राइजेस नहीं थे रियल में से बोलो तो। ये रहा स्टार्टिंग 11। अगेन आप बोलोगे यार मे बी हैवर्ड शुड हैव स्टार्टेड, लेकिन नहीं, जैसे मैंने बोला लुकाकू गॉट 2 goals, और क्या ही तो चाहिए आपको। सीइंग दैट, डेफिनेटली कोई मिस्टेक नहीं। और मिडफील्ड में वी हैड इंजरीज, तो यार साउल को स्टार्ट तो करने नहीं वाले थे डेफिनेटली, वो तो बहुत शौक रहता, क्योंकि हार्डली खेला रिसेंटली, एंड डेफिनेटली कोवाचिच एंड लॉफ्टस-चीक स्टार्टेड। हाँ, मे बी एस्पिलिक्वेटा नहीं लगे इतना मतलब फिट, मे बी यू कैन से दैट व्हाई नॉट चालोबा, लेकिन वो बहुत ज्यादा ब्रेव होता है, स्पेशली जब जॉर्जिनो नहीं आपका कैप्टन। सो फेयर, आई वाज हैप्पी स्टार्टिंग 11। हाँ, मे बी जस्ट वो जियश, आई डोंट नो फॉर वर्नर, लेकिन वर्नर अगेन हैज बीन फॉर्म प्लेयर, और पुलिसिक भाई कैप्टन अमेरिका है टॉड बॉली के अंदर, मुझे लगेगा ज्यादा स्टार्ट करेगा। दैट्स जस्ट आई व्हाट आई फील, लेट्स सी। देखिए ना, फॉर्मेशन वाज इंटरेस्टिंग। वी वर गोइंग 3-4-1-2 वर्सेस वुल्व्स जो है, दे वर 3-5-2, और पेड्रो नेटो यार चेल्सी का जो खेलने थे, दे हैड टू प्ले पेड्रो नेटो, ही डज वेल डिस्पाइट इतना खेले नहीं रिसेंटली। और फर्स्ट हाफ कैसे रहा भाई? फर्स्ट हाफ रहा ड्रॉस, सिंपली पुट ड्रॉस। हाँ, क्योंकि जैसे आपने देखा वो स्टार्टिंग 11 का फॉर्मेशन, वी वर दैट वे। हाँ, हमने रन किए काफी, आई थिंक पॉजिटिव। चलो पॉजिटिव की बात करते हो। हाँ, बाय द वे कमेंट करिए नीचे कौन था आपका मैन ऑफ द मैच, especially Chelsea से। what is it that you're looking for? Okay, wow, this is something that stood out apart from Lukaku 2 goals, तो वो तो obvious positive है। लेकिन हाँ, फर्स्ट हाफ में आई सॉ लॉफ्टस चीक और कोवाचिच का जो मिडफील्ड था ना, हाँ, काफी ट्रांजिशन में बीट हो रहा था एज ऑलवेज, लेकिन ऑन द अटैक वी वर गुड। लॉफ्टस चीक वाज मेकिंग गुड रन्स, और वही नहीं, गुड रन बाय वर्नर जो हुआ है रिसेंट वीक्स में, और लुकाकू ज्यादा अप्लाई कर रहे थे अपने आप को, वही चाहिए था हमें। पुलिसिक का फाइनल पास थोड़ा सा लेट आ रहा था, दैट वाज थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग, लेकिन ओवरऑल आई वुड से ओके, नॉट टू बैड। अलोंसो, हाँ, ही इज हैविंग अ प्रॉब्लम, पेस नहीं है भाई, आप बीट हो गए राइट साइड में, दैट इज ऑपोजिशन राइट साइड, दैट इज क्वाइट एक्सपेक्टेड, सो दैट इज ओके। और रीस जेम्स मेड सम ब्रिलियंट रन्स, और मेंडी जो आउट ऑफ फॉर्म है, ही एक्चुअली गॉट गुड पोजिशनिंग एट टाइम्स, लेकिन सेकंड हाफ में क्या होता है, चेंजेस होते हैं, साउल आते हैं भाई, एंड दैट वाज काइंड ऑफ सरप्राइजिंग। मतलब सच में बोलता हूं, एकदम साउल कमिंग ऑन वाज सरप्राइजिंग फॉर मी एट हाफ टाइम, एंड अलोंसो गोइंग ऑफ, तो यार ही इज नॉट योर नेचुरल लेफ्ट विंग बैक, सो दैट वाज एन इश्यू। लेकिन हाउ डिड वी प्ले? वी हम 100% हमने एक गियर ऊपर गए, एंड वी सॉ दैट अगेन Romelu Lukaku, if he's fed early, he can do things, और वही हुआ। It was basically a penalty shout, नहीं दिया, VAR came to the party, और that is when we got it, the penalty, clear penalty भाई, it was a clear penalty, clear, leg से block किया था, I think it was size, if I'm not wrong, comment below। लेकिन I think Reece James, Aspilicueta के बीच में था play, and then it went to Romelu Lukaku, who kind of wanted to dribble, लेकिन size didn't let him go, so it was a clear penalty। Romelu Lukaku took it। इतना प्रेशर मोमेंट उसके लिए सच में यार, इन फ्रंट ऑफ द न्यू ओनर, एंड जो हुआ उसके साथ इन टर्म्स ऑफ फॉर्म और व्हाटएवर मीडिया बैकलैश एंड ऑल दैट, आई वुड से बहुत अच्छा पेनल्टी, बहुत ही अच्छा पेनल्टी। इट वाज अराउंड द 55 मिनट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और जस्ट अ फ्यू मिनट्स लेटर, लाइक इन फैक्ट 2 मिनट लेटर ही, Christian Pulisic got a ball luckily, क्योंकि Wolves defender did not clear it, and वो rebound होके somehow ricochet falls to Christian Pulisic, and Christian Pulisic passes to Lukaku finally first time, और Lukaku takes it first time again on his right foot, great curling low shot, clear goal, it is 2-0। और मैं सोचा भाई what a great start, Todd Burley was like सीटी मारे थे वो तो, that was the time that मैं सोचा definitely it is time यार, do a Jose Mourinho, make your substitutions the way that you want to, or just play the same team, लेकिन यार get your word of mouth right, get your message right, लेकिन नहीं, ये तो नहीं हो रहा है। I know that is the criticism that Thomas Tuchel needs to take।
I don't know what kind of substitutions we were talking about. I don't agree. मैं agree नहीं करता क्योंकि on the other hand, Wolves जो substitutes लाई, wow, what an impact! Wow, Wine, Chiquinho and Trincao. Trincao and Chiquinho particularly, they linked up really well. And Chelsea जो लाई, they got Saul Niguez selected half time में, फिर Malang Sarr 87th मिनट में, हाँ 87 मिनट में. तो by then by the way बहुत सारे chances बन गए थे Wolves के, हम बैकफुट में थे प्रॉपर. और काई हैवर्ट्स आया था रोमेलू लुकाकू के लिए और स्टिल बेसिकली 6 मिनट से स्टॉपेज टाइम में. और आई कैन नॉट बिलीव इट, आई जस्ट कैन नॉट बिलीव इट. हाँ उसके पहले ऑब्वियसली मैंने मिस कर दिया, एक गोल हुआ था, दैट इज बेसिकली चिकिनियो टू ट्रिंकाओ, ट्रिंकाओ लवली गोल. आई थिंक दैट वन मैं कंप्लेन नहीं करूंगा. हाँ मे बी क्लोज डाउन होने चाहिए थे, लेकिन अगेन आई वोंट कंप्लेन रियली. लेकिन भाई what was that in stoppage time? Like you are experienced players on the pitch, you can't really defend for life. What was that? Chiquinho one time cross and Conor Coady header. Are you serious? Frustration यार, frustration. That is pure frustration. आप देखिए यार अभी टेबल 2 और खत्म हुआ. You could see टॉड बोली का first game at the bridge technically, right? ये so unhappy. He was so disappointed. Look, दिख रहा था clear. और Tuchel भाई, it was like a brain fart moment. I don't know what happened. It was clearly a Chelsea missed the clue. I don't know what was it. What was it that Tuchel told towards the end? अब क्या हुआ? Malang Sarr, sorry भाई, आप कितने भी humble हो, जो भी हो, you are not fit for Chelsea. Simply put, हाँ, you can easily put blame उन पर, लेकिन I think defensive formation, what was it? Again, मैं back in the I have discussed about contract situations and all that. काफी सारे आज न्यूज आ रहे वापस आस्पिलिक्वेटा के. आई डोंट नो मैन, मतलब मुझे लगता है रूडिगर as much as he's had a great game, लेकिन that one moment I think हमारे जो डिफेंस है ना, they literally slept. I believe that they literally slept, and that is what मैं बोलूंगा यार. मतलब अगेन आप देखिए प्रीमियर लीग टेबल, we are very close now. We are what 4 points ahead of Arsenal. Arsenal एक गेम हैंड है, and of course they are playing Leeds. हम लीड्स के साथ खेल रहे हैं, हमारे ट्रेडिशनल राइवल. Will not be easy. It's an away game if I remember right. Oh my God! Imagine if Leeds भी लेती है points हमारे से, and then maybe Tottenham beat Liverpool tonight. I don't know. As I'm recording that is, and Tottenham and Arsenal kind of one of them beats. I don't know. It can be really close. It can be really close अगर हम नहीं जीतते हैं next 3 matches, and we have to win the 3 matches. हमारे hands में है. We cannot bottle this Chelsea. Come on, we cannot. We have bottled the season enough. I know circumstances, whatever be, but we shouldn't have done this. Terrible defending, that's the bottom line. Like a lot of positives, like I said, Romelu Lukaku, Ruben Loftus-Cheek definitely was a positive. और क्या बोलोगे, और बहुत सारा और भी मैं बोलूंगा. रीस जेम्स, हाँ पहले सेकंड हाफ में रीस जेम्स राइट सेंटर बैक क्यों गए थे? आई थिंक मे बी वो काउंटर अटैक जो हो रहा था इन ट्रांजिशन, वी वर स्कैर्ड ऑफ दैट, मे बी राइट आल्सो. लेकिन भाई आप रीस जेम्स का पॉजिटिविटी यूज करो ना. ही वाज ब्रिलियंट गोइंग फॉरवर्ड इन द फर्स्ट हाफ. तो दैट आई एम नॉट श्योर. अगेन क्रॉसेस के से एस्पिलिक्वेटा इज बेटर एट राइट सेंटर बैक, वो मेरा ओपिनियन है, दैट रीस जेम्स इवन. या दैट्स ट्रू. सो आई थिंक थोड़ा सा वहां इशू है. एस्पिलिक्वेटा भी सब ऑफ हुए थे लास्ट में. As I said, for Malang Sarr, that is a little bit strange, but again, it is what it is. Abhi bhi, we are third. We can still go for it. Let's see what we do. Till next time, take care. Or yes, we are doing multiple watch-alongs on both our channels. So do subscribe. Links are in the description below, as always. Till next time, take care. And Chelsea, focus. You have a new owner. You need to basically focus. Get third. Get the FA Cup. Get into form, and move into the summer transfer window. Take care. Bye.